रशिया से आए हैं, बता रहे रशिया में हमारा प्रचार कैसा चल रहा है। कोई नहीं, कोई बात नहीं। राजिदा को भेजा मैं रशिया से आए। हाँ ब्रह्मचारी है ना रशिया से। क्लास ले रहे हैं जी हमारे यहाँ रशिया में। कैसा इंडिया में आए हुए हैं, डीयू बेस में गए थे, माधव डीयू बेस में लेके गए थे इनको। हमारे घर नेपाल से गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे Today we're going to discuss history in Russia. We have got one more user, Professor. Can you hear me?
Then how can we do it? I see. So today we're going to discuss the history of Russian ISKCON. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि आज हम ISKCON रशिया You sit closer that this translation here. तो प्रभु जी बता रहे हैं हम आज ISKCON रशिया की स्थिति के बारे में जानें. Okay. So you can see some slides on the screen. प्रभु जी बता रहे हैं आप कुछ स्लाइड देख सकते हैं. And first of all, I will show you this photo. तो प्रभु जी ये वाली फोटो दिखाना चाहेंगे पहले आप. It is Moscow. ये मॉस्को है रशिया की कैपिटल. It is nearby Red Square. ये रेड स्क्वायर के पास की फोटो. You can see this Saint Basil Cathedral, this very famous Saint Basil Cathedral. तो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है. प्रभु जी बता रहे हैं. प्रभु जी asking this man. Who is what man? This man. Yes, yeah. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON and DPT. Srila Prabhupada here. तो ये इस वक्त प्रभुपाद जी है जो आपके पीछे आप फोटो देख सकते हैं. एक फोटो है. तो फाउंडर आचार्य हैं. फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON. उन्होंने ISKCON की स्थापना करी थी. तो ये उनकी तस्वीर. Okay, so you can see this cathedral of Saint Basil here. This picture. Saint Basil करके एक कैथल करके कुछ भी है. तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है. तो आप देख सकते हैं इसको वहाँ पर. And like this famous photo where Srila Prabhupada stands just he's staying just nearby this cathedral. तो आप इस फोटो को देख सकते हैं. इसमें प्रभुपाद जी काफी पास में. And also you can see here the Lenin mausoleum. Lenin mausoleum. अच्छा, जो लेनिन का जो मौसोलियम था, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं. बगल में वो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है. His dead body is lying down there. तो उनकी डेड बॉडी वहाँ पे since 1924. Since 1920 से वहाँ पे डेड बॉडी. It means next year we can celebrate 100 years that this dead body is lying down in this mausoleum. तो वो कह रहे हैं हम 100 वर्ष सेलिब्रेट कर सकते हैं उनके मृत्यु के. At least communists can celebrate. We are not communists. Those who are communists, they can celebrate this jubilee of his dead body. तो वो बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो प्रसन्नता का एक मौका है वो सेलिब्रेट करना. हम कम्युनिस्ट. So here on this photo we can see Srila Prabhupada who is going from his hotel, National Hotel. It was the name of hotel where he was staying for 5 days. नत्सुनाल करके एक होटल था. तो प्रभुपाद जी वहाँ पे 5 साल के लिए रहे थे. तो वो वहाँ से और आ रहे थे. तो आप इस फोटो में देख सकते हैं. So he was accommodated just nearby Red Square, just nearby the very center of Moscow. तो accommodated में रह रहे थे रेड स्क्वायर के पास ये एरिया था. So he could have some walk there. तो वो ताकि टहल सके, एक वॉक कर सके. And how he has got this chance to go to Moscow because usually it was not so easy for foreigners to go to enter. So how he did it because he has got invitation from Professor Katovsky. तो ये बता रहे हैं प्रोफेसर कटोस्की करके थे. मॉस्को में उस समय जाना आसान नहीं हुआ करता था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की वजह से. तो वो प्रभुपाद जी को इनविटेशन मिला तो वो वहाँ पे जा पाए. And Professor Katovsky was a academician. He was scientist who was head of Institute of Oriental Studies. Institute of Oriental Studies. It means they study what's going on in Eastern countries. तो प्रभु जी बता रहे हैं जो ओरिएंटल वर्ड है वो ईस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा करा जाता है. तो जो
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में वो प्रोफेसर थे, तो वो उनके लिए नोन कर जाते थे और उन्होंने इन्विटेशन करा था। There was Academy of Science of USSR. Now it is Academy of Science of Russia. And in this Academy of Sciences, different institutes were there, and one of these institutes was Institute of Oriental Studies. तो रशिया से पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर में बहुत सारे यूएसएसआर ने अलग स्टडीज के लिए ग्रुप्स बनाए थे, तो उसमें एक ग्रुप था, उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, तो वहाँ पे थे। And Professor Katowski was son or grandson of one famous communist and revolutionary. He also was Grigory Katowski. His name was Grigory Katowski, and the name of the scientist also was Grigory Katowski. तो उसका पूरा नाम ग्रेगोरी कटोस्की था। तो वो पुत्र या फिर ग्रैंडसन थे एक फेमस साइंटिस्ट, रेवोल्यूशनरिस्ट थे, जो कि कम्युनिस्ट थे। He is quite well known by those who are how to say, those who know communist history, communist ideology, and so on. He's quite well known person. For those who know something about it. प्रभु जी बता रहे हैं कम्युनिस्ट हिस्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं, तो वो एक प्रसिद्ध नाम थे, मतलब वो रिलेट कर पाएंगे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। But of course, we don't have to study all this rubbish. बट हमें ये बेकार फालतू कितने समय खराब। I just wanted to emphasize that this Professor Katowski was part of how to say, VIP people of those times. तो वो एक प्रसिद्ध और एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे वीआईपी पार्ट थे, मतलब वो गवर्नमेंट में वीआईपी पार्ट। So Srila Prabhupada became interested how to travel to Soviet Union, and he wrote letter to Professor Katowski, and Professor Katowski wrote and sent him the invitation, but he was not thinking that Srila Prabhupada will come, but finally he has come to Soviet Union, and Katowski was surprised, and he actually didn't know what to do now. तो प्रभुपाद जी इंटरेस्टेड थे मॉस्को में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने लेटर लिखा कटौस्की ने उनको वापस लेटर लिखा, बट वो श्योर नहीं था कि प्रभुपाद जी वहां पे आएंगे नहीं आएंगे, बट वो सरप्राइज था कि प्रभुपाद जी। So he has got chance to stay in Moscow for 5 days, and it is not because he was busy. Of course, he was busy. He always was busy, Srila Prabhupada. But he was staying for 5 days just because it was not so easy to get long-term visa. तो प्रभुपाद जी सिर्फ 5 दिन के लिए ही थे, क्योंकि हालांकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे, बट सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बिजी नहीं थे, वो बहुत बिजी थे, बट वो 5 दिन के लिए आ पाए थे। 5 दिन के लिए इसलिए आ पाए थे क्योंकि उनको वीजा ही के लिए मिला। The situation in the 70s was that one could go to Soviet Union if he has got invitation, and he could visit Moscow only. All other cities were closed for foreigners. तो 1970 के दशक में जो मॉस्को पूरे यूएसएसआर में इनविटेशन बेसिस पे ही आप आ सकते थे, एज एन कम्युनिस्ट रूल था, तो आप जनरली ऐसे ट्रैवल करने के लिए जा नहीं सकते थे, इनविटेशन के थ्रू ही आप जा सकते। And of course, when a foreigner comes to Moscow, you can see that in this communist country, everything is available in shops. And other cities where something is not available or nothing is available in shops, they will not see this because these cities are closed for visits. तो वो बता रहे हैं प्रभु जी, जो मेन सिटी रेड स्क्वायर के पास का इलाका था, वहीं पे ही आपको शॉप्स पे चीजें आसानी से मिल जाती थी, और जो बाकी सिटीज क्लोज कर दी गई थी ताकि फॉरेनर्स आके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना क्रिएट कर ले कि यहाँ पे सब मिल रहा है। नहीं, बाकी सिटीज क्लोज कर दी गई थी, बट कुछ इलाकों में फॉरेनर्स को अलाउ करा जाता था और शॉप। And everything was available mainly in Moscow. Many things were available in Moscow, what was not available in other cities. So in those times, there was such question. What is it? Green, bone, and smells with sausages. Smells with has smell of sausage. So what is it? Bone, green, and it smells with sausage. हाँ, तो सॉसेजेस के बारे में बता रहे हैं। तो उधर
शॉप में वो चीजें अवेलेबल मॉस्को के रीजन में ही होती है ज्यादातर, एक परसेप्शन क्लिक करा सकते हैं मॉस्को में सब चीजें अवेलेबल। What he is saying. You don't understand what is sausage. No, it is, well, it is cow flesh, but it is packed such like intestine, form of intestine. Intestine, form of where it is very prevalent in you're so happy people. You don't know what sausage is. That is so nice. Where is your mobile? Yeah, exactly. It is sausage. सॉसेज एक प्रकार का मीट है नॉन वेज में। Ah, you didn't know. Now you know. Now you know. It is cow flesh. It is cow flesh in such form. Okay, so such food is prepared in 70s. What is it? A long, green, and it has smell of sausage. Right? तो वो बड़ा सा था हरे रंग का, उसमें बदबू आता था सॉसेज। And the answer was that it is train which goes from Moscow to another city. And in this train we have passengers who bought sausages in Moscow because these sausages are not available in another city. So they bought it and they go back to their city. So this train, because it is green, green and has smell of sausage. So it is about this train. वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि लोग मॉस्को आया करते थे उसको लेने के लिए, वो अवेलेबल नहीं हुआ करता। हाँ, पर मॉस्को में ही चीजें अवेलेबल, बाकी चीज क्लोज कर दी। Tamasik quiz, right? Tamasik. काम से वो जो होता है प्रकार के गुण होते हैं, तो एक काम से पैथेटिक माना जाता है। Yeah. Okay, we're going to the next slide. The next slide, you can see what we can see. Okay, we have two photos. We have Srila Prabhupada's photo, and we have this saint. We have this cathedral of Saint Basil as a background of Srila Prabhupada. You can see this on the next slide. यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ज्यादा फोटो है वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी और सेंट बेसिल का जो कैसल है वो आप देख। So previously, maybe in 16th century or whatever, it was working like Christian church. Now it is just monument. It is cultural heritage of ancient Russia. तो 16th सेंचुरी में चर्च के तरह काम फंक्शन करता था, बट अभी हालांकि ये मॉन्यूमेंट बन चुका है। The second photo, which you can see on the middle, Srila Prabhupada and his servant, they are looking on Lenin mausoleum, where Lenin's dead body is lying down. उसकी फोटो में आप देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद और उनके मूर्ति के साथ में वो जो मॉन्यूमेंट जिसमें माओइस्ट लेनिन की जो डेड बॉडी है उस स्मारक को देख रहे हैं। By the way, Prabhuji, did you pin my video or not? Karibov, I'm asking you, did you pin my video? Did you pin my video? Yes or no? You understand what I'm asking? Yes. So you do it. Please do it. And on the right side, we have this photo where, yeah, voice is not clear. So what you are going to do? Okay, means they didn't understand anything, right? Yeah, I think that they might understand, but it might be that. Dear friends, write me in the chat. Did you understand what I'm speaking about or not? Or it was absolutely not clear? Please write me in the chat. प्रभु जी पूछ रहे हैं आप सभी को, प्रभु जी की आवाज आ रही है, समझ आया है या नहीं समझ आया, तो आप कृपया चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। It is what? This हेडफोन has mic. voice break. This voice is cutting, voice not clear, voice breaking. Could you please fix the sound problem? Voice not clear, sound not clear. It is your responsibility, Prabhu, to make this voice clear. So what you are going to do?
And okay, let's see. So mic is okay, or what is the quality of this mic? Nice. Nice. Okay, let's see. Okay, friends, we will try to improve our service to Krishna. But try to do it with, okay? Yeah. Have the mic allow sorry, mic was have to be allowed because mic is attached to the okay, that's the online audience they will tell. Okay, okay. So the mic is charged and it is charged. Ah. So you see, you have to take care of all these technical things. You need to control that audio down there. Push all the buttons that are needed to finish. Okay? You do it. What you're gonna have to just your responsibility. Pull the weight. Should be done. Hare Krishna, can you hear us or not? Dear friends from Zoom, please write us in the chat. प्रभु जी कह रहे हैं कि आप प्रभु जी को सुन सकते हैं Yes. Zoom वाले मित्रों. Yes, now voice is clear, breaking audio. Yes, you are audible. Yes, Prabhuji. Okay, okay. Always sit here. Don't go anywhere. Okay. प्रभु जी, you want to summarize what we have spoken, or we will What for? the whole slide that we have spoken. Can I summarize? Or we want to start all over Why should we summarize? Why? What for? that it seems time and we are Everything is okay. as you wish. Yeah, I'm doing my part. They are doing their part. Technical part. No, I'm saying that the audience that were not able to understand the previous slide, right, due to technical audible issues. So do you want to summarize? We don't have time for this. We don't have time for this. Okay, Hare Krishna. So on the okay, friends. So on the right side we can see the photo where Srila Prabhupada takes a walk on Moscow streets. So आप अपने right side में देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद मॉस्को की स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं. And he was impressed by cleanliness of Moscow streets. और वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे मॉस्को की क्लीननेस को देखकर, साफ सफाई को देखकर. And also we had and we still have such machines that wash the roads with water. तो जी बता रहे हैं हमारे पास machines थी उस टाइम पे जो कि वाटर से रोड्स को साफ करती. You understand what I'm saying? Yeah. So, and he told, Srila Prabhupada told, because they have these machines, it means they are in sattva guna, they are in mode of goodness, means they are nice people. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास वो मशीन थी तो वो सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस में थी, क्योंकि हाईएस्ट गुण माना जाता है. So Srila Prabhupada liked this. प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता है. We are going further. And the next slide, we can see these famous people that should be known by everyone in the world. प्रभु जी बता रहे हैं अभी हम जिन चित्रों को देख रहे हैं वो बहुत फेमस लोग हैं और हमें इनका स्मरण होना चाहिए कि कौन है. The left photo, it is Shema Sundara Prabhu, who is Srila Prabhupada's disciple, and he was accompanied. He accompanied Srila Prabhupada in this trip to Moscow. So left side में आप देख left side, right? Yeah, left side. Yeah. So left side में आप देख सकते हैं श्याम सुंदर. श्याम सुंदर प्रभु जी है जिन्होंने प्रभुपाद जी को accompany करा. So here in the middle you can see photo of this Professor Katowski. So बीच में आप कटौस्की प्रोफेसर जो कि invitation भेजा था उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं. And you can see the duration of his life also. It is written here 1923 2001. तो आप उनकी जीवन शैली की आप वो भी देख सकते हैं कब तक उनका जन्म और मृत्यु. Okay. So here it is written on the slide that he is not grandson. He is son of that revolutionary and communist. So प्रभु जी ने जो communist grandson और son के बारे में बताया था तो ये grandson. Son. So वो son है, grandson नहीं, son.
So in here on the right side, you can see photo of Ananta Shanti Prabhu, who is the first Soviet devotee. तो आप राइट साइड में अनंत शांति प्रभु जी की तस्वीर देख सकते हैं जो कि फर्स्ट डिवोटी थे रशिया में Soviet, सोवियत यूनियन में यूएसएसआर के पीरियड में USSR, yeah. पीरियड में जो फर्स्ट डिवोटी And he is Srila Prabhupada's disciple, and Srila Prabhupada met him in 1971 in Moscow. Externally, it was looking like this, that he met him accidentally, but it is not. It is Krishna's arrangement. प्रभु जी बता रहे हैं कि 1971 में वो प्रभु जी के श्रील प्रभुपाद से मिले थे और एक्सीडेंट नहीं था, वो कृष्णा की मर्जी थी, इस वजह से मिलता है. Okay, let's go to the next slide. I will be just showing you photos and commenting these photos. प्रभु जी बता रहे हैं आपको इसमें कुछ तस्वीरें और इसमें कमेंट्री दूंगा आपको क्योंकि रशियन हिस्ट्री के बारे में कि ISKCON में रशियन. It is very simple way to give classes, right? Just show some pictures and explain. That's it. प्रभु जी बता रहे हैं काफी आसान तरीका है पीपीटी के माध्यम से समझाने का और पिक्चर्स. So actually, the photo which you can see on the screen, it is the end of 80s, where this Soviet Union was about to ruin already. So because of that, Soviet propaganda was not so strong, and Hare Krishnas could do whatever they want. प्रभु जी बता रहे हैं ये उस समय की तस्वीर है जब यूएसएसआर टूटने वाला था और रशिया में कन्वर्ट होने वाला था और वहाँ पे हरे कृष्णा मूवमेंट बढ़ रहा था और वो जो डिवोटी थे वो जो चाहे वो कर सकते थे मतलब मूवमेंट से. So here you can see this group of people who are trying to conduct a Nagar Sankirtan on Red Square in the center of Moscow. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवोटीज है रेड स्क्वायर पे नगर संकीर्तन कर रहे हैं. And this place is very special. Usually everything is restricted there. Everything, absolutely everything. तो ये जो जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थी ये यूएसएसआर के टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड. Like there was one case about 1 year ago or about 6 months ago when one Mataji from US, she came on this red square with a calf. 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 C-A-L-F. प्रभु जी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक माता जी काफ जो बछड़ा हुआ उसके साथ. And when police asked her, why did you do that? She thought, oh, I wanted to show my calf that this red square is so nice and Moscow is so nice. Such sentiment. जब पुलिस She decided to do it. जब पुलिस ने उनसे ऐसा पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा तो वो बताती है कि मुझे अपने बछड़े जो बछड़ा था उसको रेड स्क्वायर दिखाना था. उन्होंने ये कर And बहुत अच्छा रेड स्क्वायर और दिखाना. yeah, so she was deported back to US, and it is prohibited for 40 years. It is prohibited for her to visit Russia. 40. So Just for this one action. प्रभु जी बताते हैं इस छोटे से एक्शन की वजह से उनको वापस यूएस से भेज दिया गया था सिर्फ छोटे एक्शन की वजह से और उनको 40 इयर्स का बैन लगा दिया. तो 40 इयर्स तक उनको अलाउ नहीं था उनको वापस. Because now everything is controlled in Russia by one powerful man from KGB. तो KGB एक ऐसे रॉ होती है तो KGB एक वहाँ पे संस्था है जो सीक्रेट संस्था है तो इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उनके थ्रू कंट्रोल करा जाता है वहाँ पे. Okay, so this Ananta Shanti Prabhu, again, let's come back to these photos. Shyamasundara Prabhu, whose photo you can see on the left side, he was what? Again? You can show it by pointer. Pointer? By pointing. Okay, as you wish. So you can see Shyamasundara Prabhu on the left side. He was with Srila Prabhupada in the street, and he was searching for foodstuff, and it is not that he could find variety of foodstuff in Moscow. तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु जी हैं जो प्रभुपाद जी के साथ थे और उनकी सामान जो खाद्य पदार्थ लेने में मदद कर रहे थे जो कि उस टाइम पे अवेलेबल अच्छी तरह से. In 2011, we celebrate 40 years of ISKCON in Russia.
2011 में 40 years of ISKCON in Russia celebrate करा in 2011. in 2011. Because you see, 1971 2011, it makes 40 years. 1970 से 2011 Yeah. हाँ तो वो 1971. 1971 से 2011 40 वर्ष का समय बना था. So, and Shyamasundara Prabhu came on our program, on our celebration, and he was sharing his memories, how they came to Moscow and how it was, and how it was difficult to find food, non-veg food, of course. Sausages were available, but non-veg, veg food was not easy to find. प्रभु जी बताया कि श्याम सुंदर प्रभु किस तरह आए थे, 40 इयर्स का सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि कैसे वो रशिया में आए और जो फूड अवेलेबल करना कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ज्यादा खाते हैं लोग, सॉसेजेस जैसे प्रभु जी ने बताया, और वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं. Something was available, for example, when His Holiness Gopala Krishna Goswami visited Moscow in 1976. When he came on international book exhibition, he was able to find bread and how do we call it? This small and green beans. Yeah, the small green beans and peas. Yeah, peas. He was able to find this peas and black bread, and that's all. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी जब 1976 में जब आए थे, तो वहाँ पे हालांकि थोड़ी बहुत चीजें अवेलेबल बुक एग्जीबिशन के लिए आए थे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें अवेलेबल थी, जैसे ब्रेड और मटन. So he was searching for food, and and in 2019 he was telling the story, and one Mataji raised her hand, and she told, "I'm surprised how you couldn't find food the market, and you could buy a lot of different things there." तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब प्रभु जी अपना श्याम सुंदर प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो एक माता जी ने उनसे पूछा कि मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि आप वहाँ पे फूड क्यों नहीं फाइंड कर पाए, आप वहाँ पे ये बस नंबर ले लेते और ये शॉप में आप जाके ये सामान ले सकते. Not shop, market. मार्केट में जाके सामान ले सकते. Usually in this time in 70s, this variety was more varieties get on markets, not in state shops, in markets. So तो कह रहे हैं यूजुअली इस टाइम पे मार्केट्स में अवेलेबल वैराइटीज होती थी मार्केट्स में. Not state. There are state shops where this variety is limited, and there are some markets where some people from villages they sell their own vegetables and so on. तो कह रहे हैं स्टेट मार्केट में इतनी वैराइटीज अवेलेबल नहीं थी, बट no state markets, state shops. State shops, they are in the city, and in the same city there are markets where some people who grow their own food, they can bring this food, and it's cheaper. It's cheaper. प्रभु जी बता रहे हैं कि स्टेट Well, sorry, it is not cheaper. It was more expensive, of course. It was more expensive, but there was variety. प्रभु जी बता रहे हैं कि स्टेट शॉप में वैरायटी नहीं थी, और जो उसी मार्केट में जो दूसरी शॉप्स थी वहाँ पे वैरायटी भी थी, बट एक्सपेंसिव थे काफी आइटम. So this Mataji, she was surprised how Shyamasundara Prabhu could not take such and such bus and go to that market. And the answer is that Shyamasundara Prabhu didn't speak Russian language. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो माता जी काफी सरप्राइज थी कि श्याम सुंदर प्रभु जी कैसे ये बस लेकर फूड नहीं ले पाए, बट फूड नहीं ले पाए, मतलब ये बस क्योंकि उनको रशियन लैंग्वेज नहीं. He didn't speak Russian language, and the Soviet contacts with foreigners. If someone approaches you and try to speak with you in English language or whatever, better not to contact with him, otherwise he can be spy or whatever. And KGB people can call you and have a talk. Why you responded, why you responded. So प्रभु जी बता रहे हैं कि उस समय ऐसा माहौल था, जो केजीबी इंटेलिजेंस टीम थी, तो अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते, दूसरा आपसे इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करता, तो आपको एक इंटरोगेशन टाइप
पूछा जा सकता था कि आपने I don't understand Hindi. You, yes. interrogation. Interrogation. Asking question. Yes, interrogation, exactly. इंटरोगेशन करा जा सकता था कि आपने ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड करा. So, and Shimasundara Prabhu, he tells about this visit that he was trying to approach people to ask something in English and they were just running away. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि श्याम सुंदर प्रभु जी बताते हैं कि किस तरह वो लोगों से इंग्लिश में कुछ भी पूछते हैं और लोग खौफ के कारण फिर भाग रहे होते हैं. Especially elderly women. स्पेशली जो अधेड़ उम्र की औरतें. They were running away from him. वो उनसे भाग रही होती हैं. So anyway, he was searching for this food and accidentally he met Ananta Shanti, or his karmic name is Anatoly Pinyaev. तो ये फूड के लिए सर्च कर रहे थे तो उनको अनंत शांति प्रभु जी का दूसरा नाम है. What is the name? Anatoly Pinyaev. Anatoly Pinyaev. Yeah, Pinyaev. Exactly. Okay. Very simple name. Anatoly Pinyaev. Very simple. Very simple. So he was not alone. He was with a friend, and this friend was son of one diplomat, I think, of one person who was somehow related with this international relationships. तो वो बता रहे हैं कि अकेले नहीं थे, उनके साथ एक डिप्लोमेट के बेटे थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके जो थे. So, and Ananta Shanti Prabhu was, it is Soviet term, he was partsovshik. You can just repeat this word. I will explain what does it mean. He was partsovshik. He was first option. So First option. First option. what was the first option? Partsovshik. Look here. Why you're so slow? Come here. Just read what is written here. Just 1 minute. Okay, so what about sound? Do we have sound or not? तो एक बार आप प्रभु जी को बता सकते हैं कि प्रभु जी की साउंड आ रही नहीं आ रही है. आ रही है. Okay, Hare Krishna. So it might be a technical glitch from their own side. Yeah, maybe it is on their own side. Okay, come back. Thank you. So he was partsovshik. Let's repeat it again. It is lesson of Russian language. It was for shopsik. Not partsovshik. Okay, let's try again. It is funny, right? Okay, let's try. Anatoly Pinyaev was partsovshik. Nice. Is it? Could you repeat it once? Once more. Yes. Anatoly Pinyaev
So what you are going to do? Okay, is it sufficiently recharged? Actually, it is 80% charge. Uh-huh. Actually, we can ask for one more time that your voice is clear. Okay, we are going to ask again. Is our sound is clear or not? Please write in the chat. Please तो एक write बार in आप the वापस chat. बता दीजिए कि वॉइस प्रभु जी की आ रही नहीं आ रही है. Clear. So Hey, Yul, sometimes it is clear, sometimes it is not. No need of this. No need. सही Sorry. बोल, एक बार आप No चैट need. बॉक्स में बता दीजिए कि प्रभु जी की आवाज क्लियर आ रही नहीं आ रही आप लोगों को. You please use such devices that are always working nice, okay? They are saying that your voice is breaking in between. So what should we do? क्या सभी को ये दिक्कत है? एक बार आप सब बता दे तो अच्छा रहेगा. Huh? What should we do? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा. Okay, good. This one. This one. हरे कृष्णा. ऑडियो डिवाइस. Uh-huh. Okay. Can you hear us now or not? Please write us your answer. Hare Krishna. Okay.
who is responding? Yes, Prabhuji. Jatin Gaur, can you hear us? Everything is good. How are you? नितिन गौर प्रभु आप पूछ रहे हैं आप कैसे हैं आप क्या सुन सकते हैं तो बताइए प्रभु जी को Okay, we will be trying our best. Hare Krishna. प्रभु जी कह रहे हैं हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे हरे कृष्णा I don't know. Maybe we should put it here, right? In my video. Okay? Did you do it or not? I will be holding it for you. Prabhuji, I'm asking another question. Did you put it in my video or not? Yes or no? Just tell me. Okay, good. Hare Krishna. Now we're going to continue our narration. That's it. So हम अपना नरेशन अभी कंटिन्यू करेंगे Ananta Shanti was who? Repeat this word. प्रभु जी कह रहे हैं आप वापस बोलिए अनंत शांति हूँ Was who? अनंत शांति वॉज हु प्रभु जी के साथ रिपीट करिए एक बार आप लोग Huh? Illegal seller. You're right. Don't even try to pronounce this Russian word. It is not so easy for you, right? Just illegal seller, illegal buyer, illegal seller. Okay, good. So, when Shyamasundara Prabhu accidentally met Ananta Shanti and his friends, of course, it is not accidentally. It is Krishna's arrangement. प्रभु जी बता रहे हैं जब श्याम सुंदर प्रभु जी अनंत शांति प्रभु जी Yes, you're right. ये अनंत शांति प्रभु जी को मिले और उनके फ्रेंड को मिले तो ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं थी बल्कि कृष्णा की मर्जी थी So, Ananta Shanti Prabhu asked them, do you have some vinyl discs with songs of Beatles, or maybe you have jeans? तो अनंत शांति प्रभु जी पूछते हैं कि Ananta Shanti or maybe his friend, someone. So, तो उन दोनों अनंत शांति प्रभु या फिर उनके मित्र में से कोई पूछता है श्याम सुंदर प्रभु जी से कि आपके पास बीटल की सीडी है बीटल उस प्रकार उस जमाने में कोई रॉक बैंड हुआ करता था जो कि गाना गाते थे Well, not exactly CD, vinyl disc. Do you know what is vinyl? Disc. Vinyl disc. Not CD. In 70s we didn't have CD. VCR VCR means what? they would be able to it is a type of cassette right No. Oh, you don't know what vinyl disc means. OMG. it is I will same show as you. CD I guess right No, sir. No. No, sir. You don't know the history. so this is right How would you record this is DVD this is what No. You don't know. What do you know in life? OMG. OMG. You don't know what does it mean. at that time USSR was so much advanced I will show India you. was These things. So you know this. It is called it is more overrelated to DJ stuff people know it from the DJ stuff more renowned in India Yeah, because it is DJs. They don't know how to use it. They don't know how to use vinyl disc. Vinyl disc is just to listen the music which is recorded on vinyl disc. Yeah, DJs they are just playing with vinyl discs, which is not the purpose of vinyl discs. Music is recorded on vinyl disc. You just listen and that's all. तो कह रहे हैं म्यूजिक रिकॉर्ड करा जाता है और इसमें से बस बजाया जाता है उसकी ध्वनि सुनी जाती है So it is made from plastic. Yeah, you know. Have you seen? It is vinyl disc. Vinyl record. That's it. so विनील रिकॉर्ड कहते हैं So, विनील डिस्क कहते हैं जो कि रिकॉर्ड करता है okay, so in sit closer. Hare Krishna. Now we're audible, right? Right? Please write in the chat. Are we audible or not? That's it. आप लोग चैट में लिखिए कि हमारी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही So, Ananta Shanti, or actually his name was Anatoly Penyaev. Repeat his name, by the way. Anatoly Penyaev. Anatoly Penyaev Yeah, that's okay. yes What is written here? yes Audible, audible. Very nice, very nice.
Now problem is solved. Okay. Sorry. Okay. So Anatoly Penyaev, Anatoly Penyaev, he asked Shemasundara Prabhu, do you have these vinyl discs with Beatles recordings? You know what Beatles means? Yes, This- rock band. Music that they used to make music back then. Yeah. The rock band. Well, I'm not sure is it rock or not. Yes, but it is rock? Yes. Ah, okay. So I'm So- not an expert in all these things. Anyway, do you have these vinyl discs with songs of Beatles, or do you have some jeans? Jeans, understand, right? Jeans. तो वो एनाटोली पिनायव Yes. श्याम सुंदर प्रभु जी से पूछते हैं कि आपके पास ये विनाइल डिस्क है या नहीं, और उसमें बीटल्स की रिकॉर्डिंग है कि नहीं, और या फिर जीन्स की बात कर रहे हैं प्रभु जी. Yeah, because in those times it was very prestigious if Soviet person could wear jeans. In US, it is the clothes for worker, for simple worker, for working on construction or whatever. But in Soviet Union, it was considered to be prestigious to get jeans from abroad. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि भारत से मंगाई गई जीन्स को पहनना यूएसएसआर के टाइम पे गर्व माना जाता था, और बल्कि बाहर के देशों में यूएसए में उसको वर्कर्स ज्यादातर यूज करते थे जीन्स को. Yes. So Shemasundara Prabhu, he told, I don't have these vinyl discs with songs of Beatles, but I have a guru of this Beatles group sitting in my room in hotel. सो प्रभु जी बताते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु जी बताते हैं कि मेरे पास विनाइल डिस्क तो नहीं है, बट मेरे पास बीटल्स के हाँ मेरे पास बीटल्स के गुरु हैं जो कि होटल में बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं. Okay. So Ananda Shanti Prabhu or Anatoly Penyaev, he expressed his desire to see spiritual master of this group Beatles. तो अनंत शांति प्रभु जो कि एनाटोली पिनायव थे, वो उन्होंने इच्छा उजागरित करी कि वो स्पिरिचुअल मास्टर को देख सके, गुरु को देख सके, बीटल्स के गुरु को देख सके. So the first question which Srila Prabhupada asked to Anatoly Penyaev when Anatoly Penyaev entered this room in hotel, the first question was, so where is your Lenin? So प्रभु जी बता रहे हैं कि जब एनाटोली पिनायव जब पहली बार रूम में गए तो प्रभुपाद जी ने उनसे यही पहला क्वेश्चन जो ये पूछा कि लेनिन कहाँ पे है. Yes, so where is your Lenin? आपका लेनिन कहाँ पे है. And Anatoly Penyaev, he told he's lying down in mausoleum. So एनाटोली पिनायव ने बताया कि वो मौजोलियम जहाँ पे उनका मृत स्थल है वहां पे वो लेटे हुए हैं. And Srila Prabhupada responded, actually it is his body what is lying down in mausoleum, but where is Lenin himself? तो शीला प्रभुपाद जी ने ये बताया कि ये तो उसकी सिर्फ बॉडी है, बट वो खुद कहाँ है. So Srila Prabhupada came in USSR for 5 days, and he had about 2 or 3 days to discuss different subject matters, spiritual subject matters, with Anatoly, and to give him very short version of Bhakta program, very short version. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि शीला प्रभुपाद सिर्फ 5 दिन के लिए आए थे, बट उसमें से 2 या 3 दिन जो एनाटोली पिनायव को है उनको उन्होंने भक्ति प्रोग्राम के बारे में बताया. उनके पास कम समय था मतलब बताने का, प्रचार करने का. And of course, after that, Anatoly needed to get some additional training, because what you can learn during 2 or 3 days. प्रभु जी बता रहे हैं एनाटोली पिनायव को एडिशनल ट्रेनिंग मतलब और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि 2 या 3 दिन में कोई व्यक्ति क्या ही सीख सकता है. So here we can see this famous photo. You can see on the right side, you can see Ananta Shanti or Anatoly Penyaev. तो आप ये एक प्रसिद्ध फोटो देख सकते हैं जिसमें राइट साइड पे एनाटोली पिनायव जो कि अनंत शांति प्रभु है. Okay, and I will explain you, don't worry. On the right, Ananta Shanti is on the right side. अनंत शांति प्रभु राइट साइड पे है. So on the left side, you can see Stas Namin, and he is musician. He is Ananta Shanti Prabhu's friend. तो लेफ्ट साइड पे आप अनंत शांति प्रभु के फ्रेंड Stas Namin. तत्नामिन. Very simple name. Stas Namin.
That's Stas. Namin. Stas. That's Namin. Yeah, very simple name. Not Shash, Stas. Not Stas. Stas Namin. Okay. That's Namin. Very nice. Thank you. It is good. So now you know some names, some words, right? You can use it in your life. So Stas Namin was a leader of musical group which was called Flowers. तो तस नामिन म्यूजिकल ग्रुप फ्लावर का लीडर था. Not Flowers. फ्लावर्स ग्रुप का म्यूजिक, हाँ, फ्लावर्स ग्रुप का नाम एक म्यूजिकल ग्रुप था, उसका वो लीडर था. Yeah. And in Russian language, the name of this musical group is Цветы. स्मिति. Цветы. Цветы. स्मिति. Yeah. Цветы means flowers. So स्मिति रशियन में फ्लावर का मतलब है, तो उसका नाम वो था ग्रुप का. And he is also grandson or son. I will check. It's written here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Where it is? Grandson. Yeah. Stas Namin is grandson of Anastas Mikoyan. Anastas Mikoyan, he was minister of Soviet government. So this Stas Namin is grandson of very, very powerful person in USSR. So तस नामिन एक Grandson of one of the ministers in Soviet government. ग्रैंडसन था एक जो मिनिस्टर थे, उनका ग्रैंडसन था जो कि पॉलिटिकल उस पावर में थे, सोवियत यूनियन के टाइम मिनिस्टर में. This minister was in charge of external affairs. So वो डिप्लोमेट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर्स को देखते थे. And he was on his position. He was for a long time, and maybe 25 or 30 years. So वो अपने समय में काफी लंबे दौरान के लिए थे, 25 से 30 वर्ष के लिए. And in the middle of this photo, if I am not wrong, in the middle of this photo we see Mataji Mondachini from France. So बीच वाली फोटो में हम देख सकते हैं, On this photo, in the middle, Mataji Mondachini from France. माताजी मोंदनिकी Mondachini from France, Srila Prabhupada's disciple. तो शीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल, जो कि बीच में आप देख सकते हैं, माता मोंदकी. Mondachini. At least it looks like that she is dressed in European style. At least we didn't have such clothes in Soviet Union. So प्रभु जी बता रहे हैं यूएसएसआर टाइम पे ये जो कपड़े हैं, क्लोथ्स है, ये वहाँ की वेशभूषा नहीं है, तो ये यूरोपियन हो सकती है जो इन्होंने वेशभूषा पहन रखी है. It looks like she is from abroad. Looks like she is Mataji Mondachini, famous Mataji Mondachini. She was sent to Soviet Union by Srila Prabhupada himself in order to train Anatoly Pinyan in Krishna consciousness. तो ये फेमस माताजी मोंदकिनी है, जो कि शीला प्रभुपाद जी ने इनको ट्रेन करा था ताकि अनातोली पिनायेव को ये बता सके, मतलब ट्रेन कर सके. So Mataji Mondachini was sitting in Paris and she was meditating that she wanted to do something special, some special service for Srila Prabhupada and for his satisfaction. And after a few days, Srila Prabhupada came to visit this temple in Paris, and he called Mataji Mondachini and he told her to go to USSR. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो माता जी है, तो वो पेरिस में मेडिटेशन कर रही थी, तो उन्होंने आग्रह करा प्रभुपाद जी से कि उनको उनके और उनके डिसाइपल्स के लिए कुछ करना है. तो प्रभुपाद जी ने बताया कि आप यूएसएसआर में जाकर अनातोली पिनायेव को ट्रेन कर सकते हैं. And they even got married in order that this Mataji could have a long-term visa and stay in Soviet Union for a long time. प्रचार अच्छे से हो सके, तो उन्होंने शादी भी कर ली अनातोली पिनायेव से, ताकि ट्रेनिंग उनकी अच्छे से हो सके और उन्हें वीजा मिल सके, वहाँ लंबे समय के लिए वीजा मिल सके. So they were together for some time, but anyway, Mataji faced with these difficulties to get long-term visa, and after some struggling, of course, she took permission from Srila Prabhupada, but anyway, after some time, it was finished. This period of training, when Ananta Shanti Prabhu has got some training, this period was finished. So माता जी ने काफी ट्राई करा कि उनको वीजा में लंबे समय के लिए वीजा मिल सके, बट ये थोड़े टाइम बाद ये जो उनका जो बॉन्ड था, जिन ट्रेनिंग पीरियड था, तो वो खत्म हो चुका था और रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं. And Anatoly Pinyaev,
he has got this training that actually you can get here, for example, in India, in Delhi, on this basis, because you can learn how to follow sadhana, you can learn how to cook for Krishna, you can learn some basics of Vaishnava culture, you can learn how to put on tilak and all these things. तो प्रभु जी बता रहे हैं अनतोली विनायक को जो ट्रेनिंग मिली है वही ट्रेनिंग हमें जो दिल्ली बेस में जो हम यहाँ रह रहे हैं उस प्रकार की मिल सकती है जिस प्रकार हम तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक, वैष्णव सदाचार और अलग अलग जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उस तरह भोग लगाना और साधना की जो ट्रेनिंग हम यहाँ करते हैं बेसिस में. So here, this photo is quite interesting. You can see these 3 great personalities together. Stas Namin, Mataji Mondakini, and Anatoly Pinaev. तो प्रभु जी बताते हैं ये तस्वीर बहुत प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं इसमें 3 विशेष लोग हैं, अनतोली पिनायव और बीच में माता मोंदनिकी और मोंदाकिनी और तस्मिन. What's the last name of the person? Anantashanti or Anatoly Pinaev. No, the first one. The first, Stas Namin. तस्नामिन देख सकते हैं. Stas Namin, very simple. Like we don't do this, right? Stas Namin. And yeah, we go further. So we have few photos of Anantashanti here. And different photos, different age. This photo, which you can see on the left side, this photo was made after he was released from mental house. अनतोली पिनायव. Anatoly Pinaev. सो ये आप लेफ्ट साइड में जो फोटो देख रहे हैं अनतोली पिनायव की है जब उनको मेंटल प्रिजन से बाहर मतलब पागल खाने से बाहर निकाल दिया गया था तब की ये तस्वीर है. Because it was such kind of punishment that people could be not only imprisoned, but they could also be accommodated, if we can tell like this, accommodated in mental house, and as if they are mentally sick. They are not mentally sick, but anyway, they are forced to take some medicines that are meant for people who are mentally sick. प्रभु जी बता रहे हैं इस तरह की जो विचारधारा थी उसको प्रमोट नहीं करा जाता था और ऐसे लोगों को पागल खाने में भेज दिया जाता था और विशेष तरह की दवाइयाँ मेडिसिन खिलाई जाती थी. So in such way, Anatoly Pinaev or Anantashanti was tortured by these medical workers for about 5 years. So इस तरीके से अनंत शांति प्रभु को जो कि मेडिकल वर्कर्स थे, पागल खाने के कर्मचारी, उन्होंने बहुत ज्यादा उत्पीड़न या पीड़ा दी उनको काफी 5 वर्ष के लिए. 5 वर्ष. 5 years. 5 वर्ष के लिए. 5 वर्ष के लिए. 5 years. 5 वर्ष के लिए. 5 वर्ष. 5 वर्ष के लिए. Now looks like I will learn some details, right? 5 वर्ष के लिए. Okay. So and the question raises how he could survive, because the goal when they give all these medicines to these people in order to punish them, to punish what they are punished for. They are punished because they don't accept communist ideology. They don't want to be normal people, so-called normal people. So यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अनतोली पिनायव कैसे सरवाइव कर गए, कैसे बच गए, बल्कि उनको इतनी तरह की विशेष मेडिसिन दी गई थी जो कि पागल लोगों को दी जाती है और कम्युनिस्ट लोग देते थे जो कि इस आइडियोलॉजी का प्रचार नहीं आगे बढ़ना चाहते थे. So basically the goal was just to destroy his personality, to destroy his consciousness by giving him this medicines. तो इसका यही गोल था कि मेडिसिन देकर या दवाइयां देकर उनका जो साधना करने का तरीका सब है, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस उनका जो है वो तोड़ी जा सकती. So how he survived? He survived because in breaks in between, when it is not that he always was under influence of these medicines, but in the periods when he was more or less conscious, he was hiding himself under a blanket and he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Each and every moment when he was more or less conscious, more or less he would be conscious and he could act consciously. He was just chanting holy names of Krishna.
तो प्रभु जी बता रहे हैं अगर कृष्णा कॉन्शियस कम हो जाते थे या फिर उनकी चेतना थोड़ी भंग हो जाती थी, तो जो बीच का दौरान होता था, जब उनको दवाइयां नहीं दी जाती थी, तो वो ब्लैंकेट चादर ओढ़कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। So it is how Krishna protects his devotees. तो प्रभु जी बताते हैं इस प्रकार ही कृष्णा अपने भक्तों की उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं। And of course, you can ask why Krishna didn't protect Anatoly Penyaev in such way that these Soviet people would not persecute him. Why he didn't give him such protection? तो प्रभु जी बताते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि आप एनातोली पिनायेव को कृष्णा ने सोवियत यूनियन से डायरेक्टली क्यों नहीं बचाया, मतलब उनके इन्फ्लुएंस से डायरेक्टली क्यों नहीं बचाया, जो उनको मेडिसिन सब मिलती थी। And the answer is such that if you are there, what you can expect? If you are in Soviet Union, what you can expect? If you well, it is not the big problem if you are a believer, if you follow some religion, but if you become active preacher, then it is punishable. If one becomes active preacher, and he was really active preacher. प्रभु जी बता रहे हैं अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलो करते तो आपको पनिशमेंट मिलती, बट अगर आप एक एक्टिव प्रीचर, मतलब आप अगर फ्रंट फुट में आकर प्रीच करते, हाँ, तो आपको इसके लिए पनिशमेंट ज्यादा मिलती थी। Because according to Soviet constitution, this freedom, religious freedom, was that one could practice something, but but if to speak about propaganda of some views or beliefs, he could propagate only atheistic philosophy. The propaganda of or preaching of some religious beliefs was prohibited. It was not written here even in constitution. तो प्रभु जी बताते हैं कि सोवियत यूनियन के संविधान में ऐसा कोई भी संविधान नहीं था, ऐसा संविधान था कि आप रिलीजियस, जो कि उनकी प्रैक्टिसेस को आप प्रीच नहीं कर सकते थे, बट जो कि एथिस्टिक, मतलब जो कि नास्तिक विषय पे आप प्रचार और प्रोटेस्ट कर सकते थे, बट प्रीच कर सकते थे, बट रिलीजियस चीजों पे पाबंदियां थी। So here you can see Stas Namin with his colleagues. तो यहाँ पे आप तस्नामिन देख सकते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, And his famous musical group Цветы. एंड और उनके फेमस म्यूजिकल ग्रुप फ्लावर्स स्मृति, Not Цветы, Цветы. स्विति, Цветы. स्वेति, Very nice. स्वेति। Very nice. Very nice. So you can see person on the left side of Stas Namin. Stas Namin is in the center of this photo. And on the left side, you can see Valmiki Muni Prabhu. सो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वाल्मीकि मुनि प्रभु है। On the left side of Stas Namin, who is in the center. of this लेफ्ट साइड ऑफ तस्नामिन, जो कि सेंटर में है फोटो के। And Valmiki Muni is the second Soviet ISKCON devotee. तो वाल्मीकि मुनि प्रभु सेकंड एस्कॉन रशिया के डिवोटी, Soviet devotee. Not सोवियत Russian, Soviet. सोवियत It is difference. सोवियत There is a difference. डिवोटी है। Not the same. So he is not so well known as Anatoly Penyaev or Ananta Shanti. Not so much well known because he met Srila Prabhupada in 71, and in 73 he immigrated to US. तो प्रभु जी बताते हैं कि इतना इनका इतने उधर इतने फेमस नहीं हुए, क्योंकि 71 में प्रभुपाद जी से मिले और 73 में यूएस से चले गए। He went to US in 70s. Some people they could go to US if they had some reasons to do it. प्रभु जी बताते हैं आप उस समय यूएस से जा सकते थे, बट तभी अगर आपके पास कोई अच्छा रीजन या अच्छा कारण है जाने का। It was going like this. First, Ananta Shanti was preaching to some people, including this Stas Namin, and then Stas Namin, who is leader of this musical group Flowers, he preached to Valmiki Muni, and Valmiki Muni became devotee in such way. So he is the second Soviet devotee, ISKCON devotee. तो प्रभु जी ने बताया किस तरह ये प्रक्रिया चली। पहले एनाटोली पिनायफ अनंत शांति प्रभु जी ने तस्नामिन को प्रचार करा, और तस्नामिन ने वाल्मीकि मुनि प्रभु को प्रचार करा, जो कि दूसरे एस्कॉन सोवियत के डिवोटी बने। And he was initiated, it is written here in his short biography, he was initiated in 1976. तो
आप देख सकते हैं इनकी बायोग्राफी में लिखा है कि 1976 को ये इनिशिएट हुए थे भक्त ध्वनि। Yeah, he is Srila Prabhupada's disciple. He was in US when he was initiated. तो ये शीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे जब इनिशिएट हुए, जब वहीं यूएसए में। It is also written here in this short biography that he has wrote some songs about Krishna, and actually I found these songs on YouTube. These recordings are available there, and according to some remembrances of Srila Prabhupada's disciples, Srila Prabhupada himself had heard these recordings, and he liked these recordings. तो प्रभु जी बताते हैं कि उन्होंने कुछ गाने भी बनाए जो कि अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और शीला प्रभुपाद जी को वो काफी अच्छे लगे। So if you like, I can share these links from YouTube on these recordings, and if you like, you can also hear these songs. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्रभु जी इसके लिंक भी भेज सकते हैं, जो कि आप बाद में सुन सकते हैं इसको। And the reason why he went to US is very simple. He just wanted to practice Krishna consciousness freely, तो without any impediments. तो प्रभु जी बताते हैं यूएस से जाने का यही कारण था, ताकि वो अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर सके बिना किसी रुकावट या रोक टोक। Okay, so also here it is written that for some periods of time he was visiting USSR and he was helping Ananta Shanti in his preaching. तो प्रभु जी बताते हैं कुछ दौरान बीच बीच में वो यूएसएसआर जाते थे और अनंत शांति प्रभु एनाटोली पिनायफ की मदद भी करते थे। Very nice, very nice. So here we have these photos. We can see Gopala Krishna Goswami here. The photo which you can see on the right side, it is 1976. It is international book exhibition, and he is sitting here as a representative of Bhaktivedanta Book Trust. सो आप जो अपने राइट साइड में फोटो देख रहे हैं, वहाँ पे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, वो एज इन बुक एग्जीबिशन के लिए आए थे, उसकी ओर से आए थे बुक एग्जीबिशन के लिए, वर्ल्ड बुक एग्जीबिशन के लिए। And the person who you can see on the same photo on the right side in this suit, he is also Srila Prabhupada's disciple, but I don't remember his name. So they went together. तो प्रभु जी बता रहे हैं जो राइट साइड की फोटो में, राइट साइड पे आप जो व्यक्ति देख रहे हैं जो सूट पहने हुए हैं, वो भी शीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, उनके भक्त, उनके गुरु थे, सॉरी उनके शिष्य थे, जो कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ आए थे। Okay, and on the left side, we can see this Namahata in Moscow. It is one of the first Namahatas or spiritual meetings. Namahata in Moscow. And Gopala Krishna Goswami Maharaj is giving the class here. तो प्रभु जी बता रहे हैं लेफ्ट साइड वाली फोटो पे नाम हट वाली फोटो है जिसमें गुरु महाराज प्रीच कर रहे थे। And likely it is 1988 or 1989. Likely it is 1988. प्रभु जी बताते हैं 1988 का समय है। And we have, it is the earliest recordings of his classes in Russia and USSR. It is 1988. We have this archive, these recordings, and actually it is available on YouTube, on this Maya Ashraya YouTube channel, for example. It is there also. So प्रभु जी बता रहे हैं माय आश्रय यूट्यूब चैनल पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की ये प्रीच करते हुए फोटो भी है, उस समय 1988 के समय की। 1988 1988, yeah, that's right, that's right. Okay, we're going further. What do we have here? Okay, some disciples, some how to say, the first devotees in USSR. The name of this devotee is Vrindavan Das. पहले devotee in USSR. Yeah, first. But first devotee was Anatoly Pinev. I mean, first, they are people who became devotees because of preaching activities of Ananda Shanti. So they were first, ये पहले devotee थे जो कि अनंत शांति प्रभु के द्वारा प्रीच करने पे बनाए गए थे, और वृंदावन, what their name? His name is Vrindavan Das. So इनका नाम वृंदावन दास प्रभु जी था, जो कि अनंत शांति प्रभु जी के द्वारा प्रीच करके बनाए गए थे। He is still alive. ये अभी भी जिंदा है। It is 1946. It is his
year of birth, so he is still alive. उनका जन्म 1946 में हुआ था. Uh-huh. So, and the name of this devotee is Japa Das. Japa Das. Japa. तो जिन Japa Das. जिन डिवोटी की अभी आप तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम जपा दास प्रभु था. So mainly they were initiated by Srila Harikesha Swami. So ये इनिशिएट करे गए थे शीला Harikesha Swami. हरिकेशा स्वामी. Harikesha Swami, who was in charge of Soviet Union, he was how to say GBC. He was GBC for Soviet Union. He was GBC for that part of Europe where communist ideology was there. So in वो that times. so वो GBC USSR में भी थे और GBC यूरोप में भी थे वो. That part of Europe where communists were powerful. जहाँ पे कम्युनिस्ट ज्यादा पावरफुल थे उस हिस्से के यूरोप में भी वो जीबीसी एज अ मेंबर ऑफ जीबीसी रह चुके थे. Okay, Japa Das and oh, Mataji Premavati. Mataji Premavati. और जिनकी अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो है माता प्रेमा भारती. Premavati. भारती Not Party, Vati. प्रेमावती. Premavati. Mataji Premavati. Very famous Mataji. She translated Bhagavad Gita in Russian. सो ये बहुत प्रसिद्ध माता जी है. इन्होंने भगवत गीता को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था. The first translation was made by her. Actually, not the whole translation. We have 18 chapters in Bhagavad Gita, so they had a group of devotees, and different devotees, they took different chapters to translate, but Mataji Premavati is professional translator. तो माता जी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर है और गीता में जैसा कि आप जानते हैं 18 अध्याय हैं. तो ऐसा नहीं कि सारा उन्होंने करा, ग्रुप्स ऑफ डिवोटी थे तो लोगों ने अलग 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 थोड़ा थोड़ा करके करा था. So here in her short biography, it is written that she was coordinator of this translation work of Bhagavad Gita as it is, and she did it in 1982. It is the year of my birth, 1982. So she, when I was just born, she already was coordinating the translation of Bhagavad Gita. तो 1982 में प्रभु जी का जन्म हुआ था और उसी समय माता जी एज एन कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रांसलेटिंग भगवत गीता English. फ्रॉम इंग्लिश टू रशिया. From English to Russian. रशियन की कोऑर्डिनेटर थी. Okay, so what do we have else? Yeah, and of course it is also written here that she was in charge of Krishna Loka radio station. We had Krishna Loka radio station in the 90s till 1998. So It was working. So Krishna Loka radio station. A lot of different programs, preaching programs on the special Hare Krishna radio station we had. So 1998 1998 till this year it was working. So 1998 तक जो एक रेडियो स्टेशन जिसका नाम कृष्णा लोकल स्टेशन कृष्णा लोका स्टेशन था, उस पे अलग अलग तरह के भजन और कीर्तन होते थे. वो 1998 तक फंक्शनल था. Okay, it is written here that this radio station was working for 4 years and the audience was 30,000 listeners. So प्रभु जी बता रहे हैं कि 4 years तक ये चला था और इसकी जो ऑडियंस थी 30,000. 30,000, I mean परमानेंट ऑडियंस जो सुनने वाले लोग थे 30,000. Permanent, it means that they write letters, they phone on radio station, they ask some questions and so on and so on. प्रभु जी एक्टिव लिसनर्स की बात कर रहे हैं जो कि सुनते रहते थे और पत्र लिखते थे और रेडियो पे जो फोन लगा के बात भी करते थे. Okay, Surya Das also working. Well, the quality of this photo is not so nice, but anyway, you can see Surya Das here. So प्रभु जी बता रहे हैं जो अभी तस्वीर है उसमें सूर्यदास प्रभु जी थे. हालांकि तस्वीर की जो स्थिति है अभी कुछ अच्छी नहीं है, बट प्रभु जी का नाम सूर्यदास प्रभु है. And also we have Mataji Lilamrita. और हमारे सामने जो तस्वीर है माता लीलामृता है. And this what? Oh, this photo is historical. It is from 1976, where Gopala Krishna Goswami went to this international book exhibition, and here we can see like
Soviet people, they are interested to see these books, Srila Prabhupada's books. तो ये जो तस्वीर है काफी आइकॉनिक है क्योंकि इसमें जो गोपाला कृष्ण प्रभु हैं, गोस्वामी प्रभु जी हैं, वो Well, प्रभुपाद जी by the way, yes, Prabhu, of course, Prabhu, he was not sannyasi at that time, in 76. You're right. You're right. could you rephrase it again? Rephrase it again. I'm saying that Gopal Krishna, at that moment, he was Gopal Krishna Prabhu. He was not the Swami. So he was the representative of Bhaktivedanta Book Trust on this international book exhibition in 1976. So here on this photo, we can see Soviet people who are interested to know what are these books about. प्रभु जी बता रहे हैं 1976 में जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट एग्जीबिशन हुआ था, तो प्रभु जी उसके हेड थे एंड That's all. Okay, Hare Krishna. Okay, let's go further. What do we have here? Bharadwaj. Bharadwaj, also one of the disciples. Just let's find something. Oh, Vishwamitra. Vishwamitra Das. विश्वामित्र। Yes, Vishwamitra. तो जो Das. आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो विश्वामित्र दास प्रभु। He also the fruit of preaching activity of Anatoly Penyaev. तो ये एक फ्रूट मतलब प्रोडक्ट थे, हाँ जो प्रोडक्ट उनकी प्रीचिंग से ही बने हुए प्रोडक्ट थे। विश्वामित्र दास एनाटोली पिनायक प्रभु की प्रीचिंग से बने हुए। So he is scientist. सो वो ये साइंटिस्ट है प्रभु, वैज्ञानिक। And yes, but again in the same 1982, he was imprisoned. बट 1982 में उनको कारागृह में डाल दिया गया था। So here one of those devotees who took some sufferings for Krishna. तो ये कुछ डिवोटीज थे जो कि कृष्ण भगवान के लिए सफर करते हैं, सफर करा जिन्होंने उनका प्रचार करने के लिए। So he was sitting in jail about 5 years. तो वो जेल में थे 5 साल के समय के लिए। So the next slide, what we can see here. Yeah. Court. It is court. It is court. ये कोर्ट है। It is they are thinking how to punish Hare Krishna devotees. तो ये सोच रहे हैं कि हम हरे कृष्णा डिवोटीज को कैसे पनिश कर सकें। Okay, what we have else? Different photos, different devotees from. His name is Vidura Das. जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं वो विदुरा दास प्रभु जी हैं। Vidura Das. Different names, different photos, different biographies. I'm just thinking what to choose because we have a lot of different photos here. प्रभु जी बता रहे हैं अलग अलग तरह की फोटोएं हैं और उनकी अलग अलग संजीवनी है, तो प्रभु जी सोच रहे हैं किनके बारे में आपको वो विशेष तरीके से बताएं। Okay, but because all these devotees in Soviet Union were punished, because of that, Hare Krishna movement in Europe and US and other parts of the world decided to arrange all these demonstrations, meetings, and so on in order to express that they protest against such persecution. तो प्रभु जी बता रहे हैं क्योंकि जो डिवोटीज को जेल में डाला गया था, तो ये अलग अलग डिवोटीज जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एज इन कि क्यों उन डिवोटीज को जेल में डाला गया, तो एक तरीके का प्रोटेस्ट था बाय हरे कृष्णा डिवोटीज। And the photo which you can see in the middle is also quite historical. Here you can see Shri Prahlad Das, who was a Gurukula boy at that time, in the middle. तो प्रभु जी बता रहे हैं जो फोटो अभी आप देख सकते हैं उसमें प्रहलादा दास नामक एक बालक है जो कि हाँ जो उस टाइम में गुरुकुल में आ चुके थे। That's it. Okay, you have to mute some. Mute them.
Ah, it is your name. Okay, so your name is Varnit Stets Holmes, right? Yeah. It is your name. No, Varnit is my name. That's my name of the course in which I'm studying. Ah, okay. Statistics. I'm studying Ah, statistics. you are studying statistics. Yes. And does it mean Holmes? Honors. Honors means what? Statistics honors. Okay, anyway. Specialization. Specialization, okay. So you can see Shri Prahlad Prabhu here in the middle. He is reading something, and what he is reading his appeal to Soviet government. Please release Hare Krishnas. So प्रभु जी बता रहे हैं जो प्रहलाद प्रभु है वो कुछ रीड कर रहे हैं जो कि सोवियत गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप जो हरे कृष्णा डिवोटीज हैं उनको रिलीज कर दीजिए जो कि जेल में है अभी. So you can see this words on his t-shirt. It is written here, "Free the Soviet Hare Krishnas." So आप उनकी जो शर्ट पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री द सोवियत हरे कृष्णास. And you can see this TV camera means officially on TV channels his appeal was how to say broadcasted. So आप देख सकते हैं ये कैमरा है जिसमें ऑफिशियल तरीके से उनकी जो अपील थी वो सरकारों तक पहुंच रही थी. And moreover, in their Gurukul, they had a musical studio, and in this musical studio, Shri Prahlad recorded song addressed to Soviet leader Mikhail Gorbachev. So मिखाइल गोर्बाचोव उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के. Very good. So प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे तो वो उनको अपील कर रहे थे अपने गाने के माध्यम से जो कि उनके गुरुकुल में था. So he wrote this song, and he told that Hare Krishna devotees should be released and so on. And again, his song is available on YouTube. So वो उस गाने के माध्यम से अपील कर रहे थे और ये जो गाना उन्होंने गाया और बनाया था वो YouTube में भी अभी अवेलेबल है. And also this song was broadcasted on TV, and he was giving interview in TV studio. He was quite famous. Then when he became how to say when he grown up, when he became an adult. Yes, when he became adult, he for some period of time he was Indradyumna Swami's assistant. He was accompanying Indradyumna Swami in his travelings, and even before that, maybe he was assistant of Navina Nirada Prabhu, famous book distributor. So he is very active. So प्रभु जी बता रहे हैं कि जो प्रहलाद प्रभु थे वो काफी फेमस थे उनके गाने के माध्यम से जो उन्होंने गाया और जब वो एक बड़े हुए एडल्ट बने तो वो असिस्टेंट थे ऑफ इंद्रद्युमन स्वामी प्रभु जी के. इंद्रद्युम्ना स्वामी जी के. He is initiating guru of ISKCON. He is Srila Prabhupada's disciple. वो इनिशिएटेड डिवोटी है और गुरु है. इनिशिएटेड गुरु है और दीक्षित गुरु है और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. Not of Srila Prabhupada. He is disciple of Srila Prabhupada. He is disciple of Srila Prabhupada. Yes. Okay. Hare Krishna, we're going to there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, it's nice. It is the history of food for life. Translate. Could you repeat? It is history of food for life. हाँ ये हिस्ट्री है फूड फॉर लाइफ जो इस्कॉन द्वारा किया गया कैंपेन था जिसमें मुफ्त में खाना बांटा जाता था. From 1988, it was allowed to register any religious organization in USSR. From 1988, any religious organization was allowed to register. So कोई भी रिलीजियस धार्मिक संस्था को अलाउड था कि वो रजिस्टर कर सके 1988 में. So here you can see that they distribute prasadam in Sukhumi. Sukhumi, it is one of the cities in, well, previously it was Georgia, now it is Abkhazia. Anyway, these details, maybe it is not so much important for us, right? So एक विशेष तरीके का बर्तन है जो कि जॉर्जिया में खाना इसमें गर्म रहता था वो है. So anyway, it is still the Soviet Union, and they distribute
They distribute prasadam. So And, yeah, please. 10 minutes. 10 minutes. Okay, just give me 2 minutes more, and we will take some questions if you have some questions. प्रभु जी कह रहे हैं कुछ समय दीजिए उनको, और वरना आप अपने प्रश्न भी प्रभु जी से पूछ सकते हैं। Oh, and this photo is very interesting, historical. You can see here Rajiv Gandhi in the middle, and Soviet Vaishnavas who came to India first time in 1989. 1989. प्रभु जी बता रहे हैं, काफी जो फोटो आप देख रहे हैं काफी आइकॉनिक फोटो है। इसमें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कि यूएसएसआर में जब आए थे 1989 में, तो वैष्णव डिवोटीज के साथ थे। 1989, it is the first pilgrimage. The first, it is the first pilgrimage of Soviet Vaishnavas to India, and they have seen Delhi, they have seen Vrindavan, and so on and so on. Before that, this steel curtain was not giving them any chance to go abroad. But now, because of that, they could go, and they were glorified so much because they went through such difficulties and challenges. So here you can see this photo where Rajiv Gandhi is with them. तो आप देख सकते हैं इसमें जो सोवियत डिवोटीज थे वो इंडिया आए थे, और राजीव गांधी बीच में जो आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, और वो वृंदावन घूमा उन लोगों ने, और पहली बार वृंदावन घूमा, और उनके लिए हालांकि बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे वीजा आसानी से नहीं मिलता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। Okay, so and on the second photo you can see how Rajiv Gandhi gets Russian Bhagavad Gita from His Holiness Gopala Krishna Goswami. तो आप दूसरी फोटो जो कि आप लोगों के राइट हैंड साइड पे है देख सकते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो राजीव गांधी है उनको रशियन भगवत गीता उपहार के भेंट में देते हैं। The same Bhagavad Gita as it is, which was translated translated by Mataji Premavati and other devotees. ये वही रशियन भगवत गीता है जो कि अदर रशियन डिवोटीज और माता प्रेमावती के द्वारा ट्रांसलेट करी गई थी। Okay, and now because our time is limited, we can go on with the questions. We can take your questions if you have जैसा कि questions. Please write questions in the chat. जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। So, and also we will ask our audience who are sitting here in our base, maybe you have some questions. If you have questions, please feel yourself free to answer questions. तो आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आप अपने आप को फ्री रखिए, आपको ISKCON सोवियत या रशिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन जो भी आप चाहते हैं। I have a question. Yes, please. Yeah. Now, is there any restrictions to do this? Under Vladimir Putin. Again, what about Putin? He's asking, is there any restrictions under Vladimir Putin? No restrictions. No restrictions. You can go and chant Hare Krishna. Of course, you have to take permission from administration of the city. Means you go to administration, you get the document, because if police will approach you, you have to show this document that you have a right. You have a right to chant Hare Krishna in this particular place. So it depends on our relationships with administration of particular city. Because if these relationships are nice, then they give you nice places to chant. If relationships are not good, then they will give you a place where there is no people at all, and you will be chanting for yourself. So प्रभु जी बता रहे हैं कि जो अथॉरिटीज, अगर आपकी कंट्री का जो संबंध है रशियन गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज के साथ अच्छा है, तो आपको अच्छे से ट्रीट करा जाता है, और आपके पास रेलेवेंट पेपर्स भी होने चाहिए जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट यू हैव अ रिलीजियस राइट टू प्रैक्टिस इट। और अगर आप
कि कंट्री का रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपको एकांत में भी भेजा जा सकता है, जो कि अच्छी चीज नहीं होगी. You told something about constitution, but I didn't tell anything about Constitution, as in they require papers, right? So paper, the right of religion to practice in Russia, religious right to practice in Russia. What about constitution? I didn't tell anything about No, I mentioned that the religious right to practice, sorry, the right to practice religious religion is mentioned in the constitution that has been reframed in Russia. So that is Yeah. the right they Yeah, get, right? now it is written, but still I didn't tell about this. Why you translate what I didn't tell? I don't Because they understand. won't be getting about the paper. So that you mentioned about paper, right? So Yeah, they I won't be getting that what paper that you wanted to mean. Okay. Did you translate that if the relationships with Yes, administration yes. of the city Yes, are yes. not good, then Mhm. you will get place where there is no people? Yes, You I translated yes, this? yes. Okay, good. Because it is the main point of this answer. Yeah, please. Speak louder. Speak up. I have one question. I want to ask you, you have abandoned your religion? Huh? You have abandoned your religion? He's Which asking. religion? He's asking, have you abandoned your previous religion, the I religion that you were? didn't have any previous religion. रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता था पहले. It is not related with Soviet government. Well, it is related to some extent, but anyway, I didn't have any previous religion. इनका कोई धार्मिक मान्यता नहीं थी पहले. In 90s, क्रिश्चियन से बट मानने नहीं देते थे, मतलब कम्युनिस्ट एथिस्ट बिलीव ज्यादा करते थे. कम्युनिस्ट और एथिस्ट, राइट? what you are saying, I don't understand. कम्युनिस्ट और एथिस्ट. So back then in US. अच्छा, You just translate. You don't try to give your own explanation. You just translate. Otherwise, I'm quite bewildered with this. First, let's answer this question. So again, let's try again. Okay, what is the question? he was asking, Huh? why did you abandon your previous religion? Why? Did you left your previous So you religion? see, there's two different questions. Did I abandon my previous religion, or why I abandoned? तो इसमें दो प्रश्न उठते हैं. That's why you have to translate exactly what was the question. Okay. So Yes. what was the question? Why did you abandon your religion? Why? Yes. Are you sure? Did you abandon Please your? be attentive. Okay. So the answer is that I didn't abandon anything because I didn't have any previous religion. कोई बताते हैं इन्होंने अपना रिलीजन अबैंडन नहीं करा क्योंकि इनके पास इन्होंने पहले कोई धार्मिक मान्यता नहीं थी इससे पहले. Prabhuji, he's asking that there are so many religions in this world, right? But why there was inclination of the devotees towards our religion, to this Vaishnav Krishna conscious religion? Okay, the answer is that it is Krishna's arrangement. तो ये कहते हैं कृष्णा द्वारा की गई व्यवस्था है, इसका यही आंसर. Very simple. Are you satisfied with the answer? आप संतुष्ट हैं? Okay, संतुष्ट. Okay, good. Yeah. Now you listen question attentively and translate exactly. Please. Yes. What's your opinion about the CIA platform? He's asking your Who is opinion. right? The CIA. Who is right? This question is provocative. प्रोवोकेटिव है, उत्तेजना पैदा कर सकता है. It's provocative. And moreover, As a whole given devotee, you have to give some suggestions about it. suggestions. Because it is humanity. Yes. You see, we can try to give some suggestions, but they are not going to listen our suggestions. That is the point. They have their own. You can give this suggestion to us. Yeah. We cannot do anything in future. You, If I will be Prime Minister of India, if you will be Prime Minister, like Narendra Modi. I will Okay. not defeat this. Well, just maintain peaceful relationships with other countries. That is instruction for you. But what about security of our country? It's necessary to Security of your country. Well, I don't know the details how your security of India should be arranged, but anyway, it is much more better to remain in peace, not to make war. It's much more better.
This question is quite provocative, especially if you are a Russian citizen. Then it is what? Question? No, it's not a question. Okay, okay, 5 minutes. Okay. Anyway, so what we're speaking about, because if you are a Russian citizen or you're Ukrainian citizen anyway, if you are not involved directly in this conflict, in this war conflict anyway, they can involve you indirectly. I mean, if you will express some extreme opinion about what's going on, then they can give you some punishment. I mean, not even if you are in another country, they can take decision that now you are punished or whatever. We don't need any problems. Better not to start any war. No, you don't understand. I'm telling you that I'm in India. That's okay, but still I'm Russian citizen. So there is connection, and through this connection, one can be caught. You know? So better to remain silent about this. And again, if you are asking what will be our suggestions, well, we can suggest something, but they're not going to accept any of our suggestions because they have both sides, they have their own vision how to act in this situation. Now, please ask some positive question if you have. Prabhuji, I have a question. Yes, please. So the book That that will be the last question because we have to go. Yes, it is not a question, just a small. Then what is it? The book that we have, small salted bread. Is it about Antonio Pine? Anatoly Pine. Antonio, it is from Italy. Italy. It is Italian name. Anatoly Pine. Yes. Anatoly Pine. Is it about Anatoly Pine? It is about his followers. His followers. It is about his followers from Armenia and Georgia mainly. If you like, you can translate. So जो salted bread हमारे पास एक बुक रखी है वो रशियन जो सोवियत डिवोटीज जिन्होंने पीड़ा सही है उन्हीं के बारे में है और वो मेनली अर्मेनियन और जॉर्जिया डिवोटीज के ऊपर है किस प्रकार उन्होंने पीड़ा सही. So again, as I told you, Ananta Shanti or Anatoly Penyaev also became a victim of this persecution, but as I know, looks like he is not mentioned in this book. He is not mentioned in this book. It is exactly about this particular group of devotees who was acting in Armenia, Georgia, and who came from Georgia and Armenia. प्रभु जी कह रहे हैं जो एनाटोली पिनायफ है हालांकि उनको भी बहुत कष्ट हुआ बट उनका एक्सपीरियंस उसमें बुक में मेंशन नहीं है जॉर्जिया और आर्मेनियन डिवोटीज का एक्सपीरियंस जो उन्होंने कष्ट सहा परसिक्यूशन उनका एक्सपीरियंस है उसमें. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Okay. It was nice to see all of you. Thank you very much for your kind attention. Hare Krishna. हाँ, so हरे कृष्णा. So अभी हम सेशन एंड करने जा रहे हैं. अगर किसी ऑनलाइन ऑडियंस में से किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा, हम सेशन एंड करने जा रहे हैं. हरि Thank बोल. you very much. Hare Krishna. हरि बोल. Hare Bol. उपाधि जय.